Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. I, Ajay Kumar, your English teacher, is now going to teach you new chapter of NCERT book class 8, that is the geography lesson. So dear student, you might be thinking why I'm just showing you this video clip, just because in this whole poem the poet has narrated or told, described his imagination about the geography, that how does it look from the jet or aeroplane, from the height, how does the earth look like. Okay, so I believe you would love this video and you will enjoy this video a lot. While reading it, while explanation, you'll have a very clear picture about our earth and geographical part of the earth. So what are you waiting for? Let's start the video. Look at this video, guys, how from the height the towns are looking like, right? The houses, the apartment, the buildings, the sport complexes and other many things. You can see how does it look like. Now look at the sky, the clouds, when it reaching to the height of more than 10,000 feet or something like that. It is filmed very beautifully. Now this plane is about to land. So again backing to the earth. So dear guys, what you have seen is awesome. Isn't it awesome? Right? Thank you. Welcome back guys to now reading part of the chapter, that is geography lesson, right? Now as I have told you that I have shown you that video just to have a better understanding that how our city or your city would look like if you saw it from
10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what is actually while you are in the thick of it, right? So here in this poem, the poet description is just such a view of the city. You can think about what type of imagination the poet has shown, written in this poem, and some questions that come to his mind. So you might be having same questions after reading this chapter. So let us start the reading. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had just looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So in this first para, the poet is talking about the images, the look, what we as general person or what a human can see from the sky. How does the city look like, and what was the reason and purpose of developing these cities, right? इन सिटीज़ को कैसे बनाया गया और जिस तरीके से डेवलप किया गया, क्या ये सही है? तो इसका पैमाना जो है कब तय होता है? जब हम 6 इंचेस ऊपर मतलब नीचे से जो है, मतलब 1 माइल ऊपर जाते हैं. 1 माइल ऊपर, इट इज़ समथिंग मोर देन 1 किलोमीटर. सो द माइल हियर इज़ मोर देन 1 किलोमीटर. यू कैन check out the measurement of what exactly the distance from the earth is in mathematics, right? And it seems inevitability. Now inevitability means the quality of being certain to happen. There seemed an inevitability. It means the quality of being certain to happen, right? क्या होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था वैसा है या नहीं है, ये हम समझ पाएंगे. अबाउट what on ground had looked haphazard. Now here haphazard means lacking obvious principle of organization. जिस पर्पस के लिए जो बनाया गया था वो पर्पस लैक हो रहा है, वो मिस कर रहा है कहीं ना कहीं. जब हम ऊपर से देखते हैं तब ये पता चलता, नीचे से हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता. एंड दिस इज़ वॉट द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन टू हिज पोएम, लाइक इट इज़ अनप्लैन्ड विदाउट स्टाइल. सो वाइल प्लानिंग फॉर एनी सिटी, एनी टाउन, there should be a proper planning. There should be proper planning for everything, like electricity, drainage system, water supply system, and many other aspects of development should be like planned before developing any city or town. So it all looked when the jet sprang into the sky. ये सारी कमियां जो है दिखने लगी जब जेट स्काई में उड़ा, और स्काई में उड़ने के बाद द पोएट हु वाज सिटिंग इनसाइड seen this visuals from the jet. So he started thinking about that. Now let us read the next para. When the jet reached to 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Now in this para, the poet is describing his imagination after reaching 10,000 feet. The height of the jet reached to the 10,000 feet. जब 10,000 फीट ऊपर ज़मीन से जब जेट पहुंचता है, then after he
सेज, वो बोलता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। क्यों किसी भी कंट्रीज़ में और सिटीज़ में जो नदियाँ होती है वो कैसे मतलब उस सिटी को समृद्ध बनाती है, डेवलप बनाती है। वाई द सिटीज़, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कंट्री में सिटीज़ क्यों होते हैं जहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती है, जहाँ पे नदियाँ बहती है, और वैलीज़ क्यों धीरे धीरे पॉपुलेटेड होता जा रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और ये एक लॉजिक है जियोग्राफी का, भूगोल का। दैट इज़ जियोग्राफिकली लैंड जो होता है, जो भूभाग होता है पृथ्वी का, उसके हिसाब से ही द मैन और पीपल आर प्लानिंग देयर हाउस, और जो घर बनाने का या जो ऐसा प्लान करते हैं वो इन्हीं जियोग्राफिकल स्केल के ऊपर करते हैं, राइट। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated. Here the poet is saying people had made a house on the land and water just because they thought, उनको ये मालूम था कि अगर हम कहीं पे घर बनाएंगे तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वाटर इज़ वेरी एसेंशियल commodity, essential thing which is required by everyone. Here delineated means it indicates the exact position of a boundary or a border. Delineated means indicate the exact position of a boundary or a border. So you can see from the above height, उतनी ऊंचाई से आप देख सकते हो कि किस नदी की बाउंड्री कहाँ तक है, किस सिटी की बाउंड्री कहाँ तक है, कौन से शहर का बॉर्डर कहाँ तक है। यू कैन सी, एंड इट ऑल वाज सीन व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। जब जेट जो है, प्लेन जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पे था, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिला पोएट को। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, it was clear that the earth was round and that it had more sea than land. In this para, let me read the another also. Okay, let me explain this one first. So now in this para, the poet is saying that when the jet rose 6 miles high, it is more than, you can say, 8 kilometers, like it is more than around 10 kilometers. 6 miles is around 8 or 9 or 10, I'm not sure about that. You can check it out on the mathematical scale. So जब जेट 6 miles हाई उड़ा, तब ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका था कि पृथ्वी क्यों गोल है, राइट। बिकॉज उतनी ऊंचाई से जब आप देखोगे तो पृथ्वी बिल्कुल ही गोल दिखेगा आपको, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट पृथ्वी पे जितना ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं गुना ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा जो है समुद्र है, सी है, राइट। बिकॉज वी नो दैट 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, राइट। सो दैट्स वाई the poet is describing about this, right? Now next para is that, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to each other to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. In this para the poet is talking about the human nature, right? The human selfishness, जो मानव की जो आकांक्षाएं होती है, जो आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है लोगों के बीच में, हेट्रेड होता है, वो एक दूसरे के शहरों के बीच में जो दीवार खड़ा करते हैं, एक देश और दूसरे देश के बीच जो बाउंड्रीज़ होती है, राइट। तो ये क्यों मतलब होता है, ये बात पोएट के समझ से बाहर थी। ये बात पोएट समझ नहीं पा रहा था कि वाई
when the earth is round, why people has made walls across the cities, and उसको डिफेंड करने के लिए वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, right? They hate each other also. So this was not clear, and the poet is Julfikar Ghosh. He's asking a question, being as a human, from the human, that it was not clear why the boundaries are made. वो जो दीवार खड़ा किया गया है, क्यों खड़ा किया गया है दो देशों के बीच में, दो शहरों के बीच में? बिकॉज ये बात उसकी समझ से बाहर है. So dear student, now I hope you have understood this chapter completely, and you will be able to answer the questions related to this in next exercise, in next class. So dear student, till then, take care and bye. Have a nice day. Thank you.